Sure. So actually, my father, वो जो business का कीड़ा है, that is in my family. So my father, when we were growing up, he tried multiple times. But of course, एक business में बहुत time लगता है to build. And at that point of time, he couldn't afford that time because he had 3 children and a wife and himself, a family to run. So वो कीड़ा तो पापा में था, वो कई बार start करते थे, but he couldn't give that time and investment and everything. So he had to go back to a job. But then you came to Delhi and you started a new life. Tell us about the differences कि बिहार में life का difference compared to Delhi में, according to you. पटना was बिहार बहुत protected, बहुत छोटा शहर था, and back then when I was living my life in Patna, it wasn't so commercialized either. So by the time I was leaving, that was when the first mall opened, PNM Mall, if I'm not wrong, Yes, right? 2010 में. 2010 में, and 2011, 2012 is when I left the city. कल एक मैच हुआ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल वुमेंस क्रिकेट. ऑस्ट्रेलिया ने 338 रन बनाए एंड बहुत लोग स्टेडियम तभी छोड़ के चले गए. बहुत लोगों ने टीवी बंद कर दिया एंड दे रियलाइज कि यार कुछ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये वुमेंस टीम है, वो लोग फिर से हार जाएंगी और उन्हें सपोर्ट करना बेकार है. मैच स्टार्ट होता है सेकेंड इनिंग में, इंडिया के 2 विकेट भी गिरते हैं एंड जो लोग बचे थे वो भी घर चले जाते हैं. बट एक कुछ ऐसा होता है कि लोग फाइट बैक करना स्टार्ट करते हैं, उनमें एक ऐसा बिलीफ आता है और इवेंचुअली वो मैच जीत जाते हैं. ये मैसेज उनके लिए है जो उन लड़कियों को अंडर एस्टिमेट किया. क्या वो लड़कियों ने इंडियंस के लिए किया या लोग जो मैच देखने आए थे उनके लिए किया? शायद नहीं, ये उन्होंने खुद के लिए किया और उस हर एक इंसान के लिए किया जो उन पर डाउट रखता है और आपको यकीन दिलाता है कि बिलीफ एक ऐसा चीज़ है, अगर आप में हो तो कुछ भी चीज़ अनटच नहीं है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है. आज इसी थीम पे हम आज शो करेंगे और मेरा नाम वो अक्षय, आपका स्वागत है बेटा ब्रेकथ्रूज के एक और एपिसोड में. इस वक्त हम दिल्ली में हैं और जो मैसेज था कि लड़कियां अगर चाह लें तो वो इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना सकती हैं, हमारे बीच में वही शख्स बैठे हैं जिसके लाइफ का जर्नी बहुत क्लोजली फॉलो किए हैं और एडमायर किए हैं. जिस तरह से उसने खुद को शेप अप किया, स्ट्रगल्स देखे, एडवर्टीज देखी और उस चीज़ को ओवरकम करके सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनी बिहार की. प्लस उसने एक वेल सेटल्ड बिजनेस स्टार्ट किया दिल्ली में ही. जो गेस्ट है हमारी स्मिता झा, वेलकम टू द शो. Thank you so much, Akshay. I'm so happy to be here. Well, I'm so happy that we are finally meeting for a podcast. We managed to do that. Tell me, how are you? How are you doing? I'm doing amazing. Absolutely. This is an absolutely delightful phase of my life currently, and I'm enjoying it to every bits. Well, ये मेरा पहला पॉडकास्ट है दिल्ली आकर के. यूजुअली व्हाट आई डू कि हमारा शो पटना में होता है एंड शायद आपको पता भी होगा जब से इस शो का जर्नी स्टार्ट हुआ था तो यू वर इन माई लिस्ट. आई वांट टू कैप्चर योर told me. लाइफ एंड And आई I एम felt सो honored. Thank you. and I felt really happy कि I got the time to shoot her. And tell us about your family and early life. Like life कैसे start हुआ आपके? Sure. So I was born in Patna, and I was born after 2 sons to my parents. So ऐसा कहते हैं मेरे parents that I was really भगवान से मांगी हुई because they were like very tired of having 2 sons and they desperately wanted a daughter. So when I was born, my father was over the moon and they were very happy to have a daughter finally. My daddy was not. She wanted a 3rd son in the family, but my father was so overjoyed that my mom keeps telling the story that he distributed sweets to the entire hospital that finally I have a daughter. And my mother wanted a daughter with big eyes and big hair, like long hair. So that's how I was kept my entire childhood. Lambe baal, sundar aankhein and all of that. Very pampered childhood after 2 sons. So of course, having 2 elder brothers, a father and mother who adored you. Very simple. Middle class family as well. Very middle class values. जहाँ पे आपको बचपन से सिखाया जाता है कि आपको बहुत मेहनत करनी है और आपको बड़ा आदमी बनना है. सो मनी वॉज नेवर द पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन, बट बिकमिंग बड़ा आदमी वॉज समथिंग दैट आई हर्ड ओवर एंड ओवर अगेन माई पेरेंट्स टॉकिंग. एंड एक सेल्स जॉब थी मेरे फादर की. ही वॉज अ वेरी लर्नेड, एजुकेटेड, वेल ट्रैवल्ड person, but at that point of time, of course, he had very humble earnings,
and having 3 children who he sent to the best school of Patna. That was his dream कि जैसा भी होगा जो भी होगा मेरे बच्चे पढ़ेंगे तो बेस्ट स्कूल में ही पढ़ेंगे. So education was so important for him that he was ready to do anything but to send us to the school of his dreams so that we get good values, we get good exposure, opportunities in life later on. So ऐसी थी जब मेरे जो दोनों भाई हैं वो मुझसे काफ़ी बड़े हैं. So my eldest brother is 10 years older and my second elder brother is 6 years older. So मैं जब बड़ी हो रही थी तो I was heavily pampered and heavily bullied as well. So but by the time I think I was in second, third, my brother started leaving the city to pursue their higher education from Delhi. And my father had a very hectic traveling job. So it was just me and my mom in Patna. My mother is not a very educated lady, but she's like a feminist who does not know that she's a feminist because she's not aware of that terminology, But she is a feminist because she raised me in a way that taught me very early on this thing. मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी और तब मुझे इसका मीनिंग नहीं पता था. Even though my father was a very doting husband, very caring, very loving, very respectful towards my mother, but she told me this. I have no idea why she told me, but she told me that no matter who you marry when you grow up, but always earn अपने लिए इतना कि whether you want to buy a 30 rupees का गोलगप्पे or 3 lakh का bag, you take out from your own bank and you don't depend on a man. Never ask money from a man. And that stayed with me. So it was a very strong upbringing, but at the same time very protected and pampered. So yeah, it was a beautiful, beautiful childhood. So like you mentioned that your father was a salesman. He was into sales. He was not a salesman, yeah. So sales means business, right? Yeah. And business, आपकी मदर भी same चीज़ कहती थी कि कुछ ऐसा करो जो larger than life दिखे. हाँ. And this is how it came to your blood, right? जहाँ पे आपके अंदर एक thinking था to do something for your own. Tell us about the transition. Like we'll talk about the transition from Patna to Delhi. You spoke about. You did your schooling from Patna. You had your childhood memories from Patna also. But then you came to Delhi and you started a new life. Tell us about the differences कि बिहार में life का difference compared to Delhi में, according to you. Patna was Bihar बहुत protected, बहुत छोटा शहर था. And back then when I was living my life in Patna, it wasn't so commercialized either. So by the time I was leaving, that was when the first mall opened. P&M Mall, if I'm not wrong. Yes, right? 2010 में. 2010 में. And 2011, 2012 is when I left the city. तो उस टाइम पे जो मेजर डेवलपमेंट हुआ था वो शुरू ही हुआ था. तो आई हैव सीन अ वेरी डिफरेंट पटना. इट वाज लाइक अ होम जहाँ पे आप घर का खाना बनाते हैं तो नेबर्स के साथ शेयर करते हैं, कुछ होता है. सो दैट कम्युनिटी फीलिंग इज सो स्ट्रांग. But when you come to a big city like Delhi, the individualism is what takes over. And plus the city is very fast. So I don't know how it happens. It's the same 24 hours, but पटना में आप स्कूल भी जाओ, ट्यूशन भी जाओ, खेलने भी जाओ, शाम को घूमने भी जाओ, आपके पास हर चीज़ का टाइम मिलता है. But Delhi में it was like my first few years were just spent in metro. So, but yeah, the city, the culture was very different. But I was not taken aback. I was really excited because living in Delhi was my dream back then. And I used to count years कि अब कितना साल बचा कि मैं भी दिल्ली जाऊंगी just like my brothers. And I would also go to malls. I would also buy from Sarojini. Was this very fancy thing for me back then. Palika Bazaar I was not very excited for, but I was very excited for Sarojini. उस समय तो फिर मैं malls में CP जाऊंगी, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी. I will have this very happening life. I was really always attracted with glamour. मुझे सब कुछ glamour और glittering बहुत पसंद था बचपन से. तो very excited. I got into Miranda. And I used to stay in South Delhi और मेरा North Campus में college था. बहुत ट्रैवल होता था, अच्छे फ्रेंड्स बने, लाइफ बहुत हैपनिंग हो गई. कैफेटेरिया, नॉर्थ कैंपस के कैफ़ेज़, क्लासेस के बाद आप CP जाओ, आप साकेत में घूमो, यहाँ वहाँ जाओ, और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ थे, सब कुछ था. इट वाज जस्ट
it was like a dream come true. It's like, wow, now I live in Delhi. So I was just this happy child who was never tired of anything. I was always from one place to the other, just hopping around, just exploring the city, just, just owning the city. It felt like it's ironical, but I from home, which is my hometown, Patna, which is Delhi, it felt like I've come home. So you talked about this felt like a dream for you. Yeah. A dream start, like you finally shifted to Delhi, you Yeah. were mall hopping, you were trying new cafes. Yeah. You had the time of your life, I would say. Yeah. Miranda mein padhna, Yeah. DU mein padhna is like a dream for many, right? Yes. And your life was so good. And then comes dark side of the life where you lose somebody from your family, and that is your father. And usually I don't like to talk about these things because ये क्या होता है ना कि everybody losses their personal, but then if you talk about it, it becomes your too. Like you also think about कि ये loss कितना heavy हो सकता है. Tell us about कि ये transition कैसे हुआ, like how emotional it was for you. Of course it's a bad question, but I would like to know कि आपने इस चीज़ के लिए कैसे इसको फेस किया, कैसे ओवरकम किया, बिकॉज आई नो ये किसी के लिए भी इजी नहीं होता है, बट यू डिड सो वेल कि अपने लाइफ को बिल्कुल चेंज ही कर दिया. टॉक अस अबाउट दैट पार्ट. I don't, I mean, it was the most traumatizing phase of my life because for most of the time I was in denial. मतलब मैंने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया because my father was fighting cancer. He had pancreatic cancer. Stage 4 is when we got to know about it. So जब पता चला तो already बहुत late हो चुका था. But my brothers, because they did not want to give us the shock, हमें मेरी मम्मी और मुझे बताया गया था that it was first stage. So when I got to know, of course, I shed some tears and then I was very positive. कि I used to Google उस time पे pandemic था, it was 2020, and I used to spend most of my time Googling the positive stories of how people overcome cancer and people, how their lives become normal again. So I was always in this delusional world कि nothing bad is going to happen to us. And my father, after a few chemo sessions, will be absolutely all right. That was my unshakable belief. And through the chemo sessions, like that time was also because we were all home, the whole bonding really happened very strong. And my father was a very aspirational writer. He used to write very good. In my school days, जो वो essay writing competition और ये सब होता था, my dad used to write it for me. I used to learn and narrate. I used to get like standing ovation from my teachers, and he was that good a writer. So I made an Instagram page for him where he would share his writings. And he got so curious and excited as a child. He would write it, I would edit it, we'll post, and they'll be like, who's commenting? And within a few months' time, he got a lot of followers from across the world. And so it was a very good, seemingly positive time because we were all taking care of him. We came together as a family. One goal, one mission, पापा को ठीक करना है. So हमारे सबके turns होते थे. My mom would make the best recipes, the most healthy recipes कि आज पापा ये सूप पियेंगे, आज वो salad खाएंगे, आज ऐसे करेंगे. I would take care of his protein intake. I would do this. Like he was the most care of me. If like अगर पापा किसी की बात नहीं मान रहे, so my brothers would like ये बोलेगे, खुशबू, that's my pet name. So ये बोलेगे and he will do it, and he would do that. So वो करते 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 through after many chemo sessions, I learned through एक report मेरे हाथ में आई थी where I learned it's actually stage 4, and that time I'd lost it. I remember crying the entire night because I was in like मुझे तो पता ही नहीं था. I was all this while I thought that this is stage 1 or stage 1 से तो most people recover through that और सब ठीक हो जाता है. But stage 4 seemed so scary at that moment. I googled again. फिर मैं वो positive side में चली गई कि नहीं, there are miracles and होता है, rare cases do come out of it, and I was hopeful मेरे पापा को तो कुछ नहीं होगा. But eventually, like we got to know about it in June, and by December, I think the last November, it was Diwali 2020, and he was already very sick, like very, very sick.
but he was faking it all. Like, he wanted to appear happy for all of us. So he'd lost a lot of weight. My dad was a very handsome man, very, like, good skin, good hair. All his clothes had to be crisped iron, like nothing. His shoes, his had to be shiny. His socks had to be matching. His belt had to be the best. He was very brand conscious and all of that. So around that time, that was the first time he started looking old for the very first time. And he started losing a lot of weight. His his skin had become wrinkled. So I remember that Diwali, he was trying to fake it so much, but he was not even able to sit straight. And we clicked some really cool pictures. He tried to make us laugh with his jokes and all of that. Just a few days later, there was this one night where my mom called me. And it's like, now the pain is becoming very unbearable. And it was midnight. And I went to the room. I was really sleepy. And I thought it's just one of those pains, because he never expressed it himself that, oh, it's getting very intolerable or it's getting out of hands. He never expressed it. He kept a lot of things to himself. And I regret that night so much, because I thought it's just one of those pains. And after like spending 30-45 minutes in that room, I came back to my room. And by morning, there was an emergency. So we took him to the hospital. My brother told me that the pain needs to be managed. He'll come back home. And then his chemo was scheduled the day after. We went to Max Saket. I was still in denial and in this delusional mood of me that everything is going to be okay. It's just pain management. And it was COVID time, so not a lot of people were allowed inside. So every time I would go in, the doctors would push me out. So sitting बाहर ऐसे बना के रखा था उन लोगों ने, canopy जैसा बनाया हुआ था. It was a very different time. COVID, a lot of protocols had to be followed. So उसमें मैं reels देख रही थी और कॉफी लेके गई. बरिस्ता था अंदर कि बस मुझे लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी होगा. And it was only my eldest brother who was inside. And my second elder brother, he was beside me. उसके चेहरे पे थोड़ा 12 तो बज गया था, but मुझे नहीं समझ में आया. Because I was so positive in life. But things changed, I think, within 30-45 minutes. I remember everything changed. And I lost faith in life completely. I hated God up until now. 5 years. I did not enter a temple because I asked one thing from God and He did not give me. So remember, as a child, I've never asked for anything from God. So I've really believed in the power of the universe and the power of God, but I've always just said, give me a lot of strength. For whatever comes in my life, I'll face it. I've never asked कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इस college में जाना है, या मुझे life में, like how people ask for materialistic thing. I don't remember ever asking anything because I was a very happy-go-lucky, vivacious girl. Like मुझे सिर्फ strength चाहिए. I can face anything in this world and I'll just make it big on my own. I don't need to ask God from that. So this is just literally one thing that I asked from God and He did not give me. So it was a very difficult phase of my life. I won't say I dealt it nice. I did not. Because I was a very protected child and I was my parents' favorite, my father's favorite. He would protect me like I'm the most, precious thing in the world. And he would always take my side if there is a family fight or anything. If there's a fight between the siblings, he would always take my side. He would always express how proud he is of me. So the most validation that I've ever gotten in my life is from my father. Every time I would go and answer somebody back, he would come and say, I'm proud of you. He would never say, why did you answer back? Because he said, you stood for yourself. And that is what I'm proud of you. Because in life, it takes a lot of courage to stand up. And you stand up. So I'm proud of my daughter for being loud. He was never like, don't be soft. He was like, I love that you're loud and you ask for what you want. And you are this very, loudest person in the room. So I lost protection. I lost a hand over my head. I lost somebody looking over me.
I lost a friend, I lost a father, I lost a parent, I lost everything in that moment. And it's like मुझे अब काम भी नहीं करना, I am resigning. मुझे कुछ नहीं करना लाइफ में. And I just, the company that I worked with, it had become like a family. I was the junior most person in that company at that point of time, and the team treated me like a family. So मैंने सबको मेल कर दिया, मुझे नहीं आना वापस. And they're like, मत आओ, कोई बात नहीं, we understand. And nobody forced me कि this is a joining date or whatever. मैंने नहीं करना. I took this longest break of my life, and I remember catching COVID also during that time. So I couldn't even go to his final rites wala thing. I was locked in a room for 14 days, crying alone. So what he testing time tha, and it completely changed me as a person. Completely. I still have so much trauma from that, and I don't want to recover from that. I think there's some pain in life that you want to keep it close, and you don't want to get over that pain. So that is one pain that I don't want to get over. That pain has become very close to me. So I love that pain now. It's ironical, but this is how it is. So that void will never go in from my life, and I don't think anybody can fill that. Well, यूजुअली क्या होता है कि हम इन सब के बारे में बात नहीं करना चाहते, बिकॉज आई फील आई एम समबडी हु इज़ वेरी इमोशनल इन टर्म्स ऑफ दीज थिंग्स. मेरे से लॉस खुद का क्या फैमिलीज़ में या फिर दूसरे के फैमिलीज़ में मिलना सुना जाता है, देखा जाता है. और जब भी ये चीज़ होता है किसी के साथ, तो आई फील कि यार कनेक्टेड टू दैट पर्सन, लाइक हाउ इज शी फीलिंग, और क्या गुजर रहा होगा, मेरा क्या वर्ड किसी को अच्छा कर पाए. क्योंकि ये चीज़ लाइफ का सबसे बिगेस्ट मिजरी होता है फॉर एनीबडी. एंड व्हाई आई टॉक्ड अबाउट दिस, क्योंकि आई फॉलोड हिज जर्नी एंड आई हैव सीन यू ग्रोथ. I have seen you more stronger compared to what you used to be. You said ki you don't go to temples. You don't need to be. The God is with you now. The Dad is watching you, and He's enough. He's giving you the strength. He's still protective, and this is why you're surviving. अगर अब वो protect नहीं करते, तो things could have been worse. You left your company, and you said you had left faith in anything and everything, but you are here, and I feel what you gave back to Him is something going to stay with you. और एक बुक आई थी आपकी, you wrote a poem based on his journey and your emotions, and you mention in your caption someday ki you will dedicate the money to XYZ cancer survivor something, and I was like, okay, what she is doing and what she is achieving, plus ये strength आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ये करना I think impossible है. तो या तो वो इंसान पागल हो चुका है, या वो इंसान को कोई गाइड कर रहा है, एंड दैट गाइडिंग फोर्स इज फादर. जो कि लाइफ में किसी का प्रेजेंस होना ही इम्पॉर्टेंट नहीं होता, इट्स अबाउट कैरिंग द लेगेसी. स्मिता झा का जो झा चीज़ है वो हमेशा रहेगा. तो इंसान का आना है जाना इज़ लाइक अ पार्ट ऑफ लाइफ, किसी के साथ भी हो सकता है, बट उस चीज़ को फॉलो करना एंड टू, एक होता नहीं यार कि यार चलो, जब भी ऑटो वाला का ऑटो बंद होता, अब तो इलेक्ट्रिक वाला आ गया, पहले उनके पास एक लीवर हुआ करता था. आपको पता नहीं, शायद पटना में होता था पुराने ऑटोज में, तो वो खींचते रहता था ऐसे, तभी वो स्टार्ट होता था. कभी वो स्टार्ट नहीं हुआ तो वो कुछ और करते थे, बट वो करते ही रहते थे. तो वॉट इट शोज कि यू हैव टू रीस्टार्ट एवरी टाइम, एंड लाइफ इज लिमिटलेस एंड इमोशन इज लिमिटलेस. यू सेड नो वन कैन रिप्लेस हिम. ऑफकोर्स ये तो जगह उनकी है, लाइक आई मेंशन जो झा वाला बात है वो तो उनका दिया हुआ है, उनके साथ ही जाएगा. But I would like to say to you personally, what you have done is something he is very proud of. He's not gone anywhere. He's staying with you. He's equally divided now. आधा आप पे, आधा मम्मी पे, आधा आपके भाइयों पे. And he's watching. Like you mentioned, he's a handsome man. So I'm sure जहाँ भी होंगे handsome ही होंगे. But what I try to convey over here, ये इतना सारे emotional talk से कि you're doing good. You're doing fine. You're doing better. And you need to continue that, because that's the segment I like to talk about. Ki life has changed, that has gone by. It's 5 years now. You did amazing things. Now talk about the orange skies happen. You wrote a book. It was so good. You got loved from a lot of people. Now how that shift has happened, let's talk about the brighter side. कि आपने उस चीज़ को कैसे खुद में personally change किया. When you look back and see your photo of last 5 years to now,
these are two different people. Let's talk about that. कि how you became the IT individual Smita to an entrepreneur or a business of क्या कह सकते हैं business woman, the youngest from Bihar और पटना और जो कि दिल्ली में काम कर रही है. Talk us about the Orange Skies. ये क्या है, कैसे हुआ and कहाँ तक गया? Sure. So actually my father, वो जो business का कीड़ा है, that is in my family. So my father, when we were growing up, he tried multiple times. But of course, एक business में बहुत time लगता है to build. And at that point of time, he couldn't afford that time because he had 3 children and a wife and himself, a family to run. So वो कीड़ा तो पापा में था, वो कई बार start करते थे, but he couldn't give that time and investment and everything. So he had to go back to a job. We saw him getting into stationery. We saw him getting into a couple of other things as well. And but we never thought that we want to take that path. मुझे तो पता भी नहीं था लाइफ में मुझे बनना क्या है. मुझे बस पता नहीं. I'm so attracted with the glamour world. As like मुझे कुछ बड़ा करना है. Like I want to have that fancy life. What? My father used to get angry. Like what? Define that glamour. What do you want to do? It's like I don't know, but I'll figure it out. So my childhood was spent like that. I was a very studious child, very. Like I always wanted to make my parents happy. So that 90% or 9.8 CGPA, 93% in boards. So my father used to be very proud. When I got into Miranda, he's like so happy. He's like, no matter आप आगे क्या करोगे नहीं करोगे, I don't know. Like my proudest moment is that my daughter is from Miranda House. Just that happy. तो वो कीड़ा एक अंदर आ गया था. तो मिरांडा में when I was doing internships and all of that, मुझे ऐसे दिमाग में आया था यार ये सरोजनी के से कपड़े खरीद के I can start an Instagram thrift store. And उस टाइम पे these things were not common. So thinking back मुझे लगता है मुझे कर लेना चाहिए था. It would have been a hit. There were hardly any competition. And it was, people were still warming up to the idea. People were open, curious. Myntra और बहुत छोटी छोटी चीज़, मतलब उस समय भी Myntra was big, but बहुत limited options थे. But somehow नहीं किया. Then I was really always fascinated with jewelry. Like I'm a jewelry person. So I used to go to Paharganj a lot. So वहाँ से मुझे manufacturers मिल गए. फिर मुझे लगा मैं jewelry बेच सकती हूँ. तो आइडिया हमेशा आता रहा. I even discussed it with people that I dated or people that I worked with, and everybody was very supportive of it. Like, go ahead. I used to work with a startup and they were like, we will give you the money, you start it. But पता नहीं क्यों, I think life happened. Sometimes you don't want to be the odd person out. Because सब लोग वो same conventional game खेल रहे थे of your completing the college, going for an MBA and then job. तो मुझे लगा मैं ही क्यों सबसे अलग करूँ, you know? I wasn't this confident girl also. I had ideas, but I suppressed those ideas to stay a part of the crowd, I would say. Right? So ऐसे से बंद हो गया. फिर I was working with Publicis Group. It was pandemic. सही चल रहा था. I learned a lot from them. The best people I could work with. I learned event management. I learned marketing, filmmaking, storytelling, internal, external communication, social media. सब कुछ सिखाया उन लोगों ने मुझे. फिर when the Papa incident happened, pandemic ही था, घर पे ज़्यादा time था. First I published that book. That book was mostly like I was writing those poems, and then I thought that I'm always a very expressive person. So I'm not someone who is scared of showing my vulnerability. Like I own my story and I can confidently talk about it, even if it is a sad story or an embarrassing story. So when I put about my emotions about Papa, some of the people who were also going through the same loss, they wrote like paragraphs to me. And they're like, you know, somewhere you have given strength. And I was like, जब होता है ना कुछ हम अपने बारे में सैड डालते हैं तो ऐसा लगता है कि यार लोग जज करेंगे, ये तो क्या सॉफ्ट स्टोरी सुना रही है, ये कर रही है. बट कहीं ना कहीं हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं. दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द पास्ट 5 years स्पेसिफिकली. सो वो पोएम जैसे ही हुआ, फिर खाली टाइम था, काम में मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, बिकॉज आई वॉज ग्रीविंग सो मच. एंड प्लस आई वॉन्टेड, एक अंदर से वो एक एंगर और कुछ आ जाता है, दैट रेज, मे बी एंगर इज नॉट द राइट वर्ड, दैट लाइफ में तो कुछ बड़ा करना है.
because when I was growing up, nobody talked about my marriage in my family. Nobody. I don't think मेरे मम्मी पापा के दिमाग में था भी कि कभी इसकी शादी कराएंगे, because all they talked about is ये क्या ambition है इसका और ये क्या career में करना चाहती है. My mother would be like, do this, do that, कुछ बहुत बड़ा करेगी. My father, मैं एक सेमेस्टर में मेरा मार्क्स अगर कम आ जाएगा, he would like get headache and all of that. We will get into a fight and he'll be like, तुम्हारा डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हो, तुम्हारा ये हो चुका है, तुम कुछ नहीं करोगी, तुम बस मिरांडा में आके ना, you're just in CP and हॉस खास and you're not studying. So they really wanted me to like do well in life and not just get married and have children. Of course, that is also a beautiful thing, but उनका प्राइमरी जो मेरे से एक्सपेक्टेशन था was to make the most out of this life because they've suffered a lot कि हमारे बच्चे बहुत अच्छा करे लाइफ में. So that was the dream. तो when I lost पापा, वो रेज थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया था. फिर मुझे लगा ये जॉब में मुझे मज़ा नहीं आ रहा है. I've always been a very creative person. तो मुझे लग रहा था I'm not able to use my creative energy in this job because यहाँ बहुत limitations हैं. आप एक हर चीज़ के अप्रूवल्स लो, ये ब्रांड गाइडलाइंस में नहीं है. एक दिन आई वाज जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटेड, लाइक आई कांट डू दिस एनी मोर. आई वॉन्ट टू यूज माई क्रिएटिव एनर्जीज टू द बेस्ट कैपेसिटी एंड आई एम क्विटिंग. बिल्कुल भी नहीं सोचा. ऑल्सो बिकॉज आई एम ब्लेस्ड टू हैव एल्डर ब्रदर्स हु टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो आपके पास उतना बैगेज नहीं होता है. सो आई थिंक आई डिड हैव दैट प्रिविलेज. आई विल नॉट शाई अवे फ्रॉम एक्सेप्टिंग दैट. घर पे रहती हूँ, नो रेंट, नथिंग. जितनी सेविंग्स थी इनफ लगा उस समय, बस रिज़ाइन कर दिया. और माई मदर यूज टू डू फूड ब्लॉगिंग बैक देन इन पैंडमिक. मुझे पता था क्रॉकरी कहाँ से सोर्स करना है. मुझे लगा बिजनेस क्या करना है. आई वाज नॉट सीरियस और एनीथिंग. लगा उस मुझे आई वाज लाइक देयर वाज सो मच इनसाइड मी दैट आई वांटेड टू टेक ऑल ऑफ दैट आउट थ्रू माई क्रिएटिव एक्सप्रेशन. दैट इज द ओनली थिंग. और क्या कर सकती हूँ. सो जॉब छोड़ी, मम्मी के साथ गई, 5,000 का क्रॉकरी उठा के लेके आया, एक इंस्टाग्राम पेज बनाया. माई ब्रदर हेल्प मी रजिस्टर माई बिजनेस थ्रू हिज CA. ही वॉज ऑलरेडी इन बिजनेस. लगाया नाम, 5 मिनट में सोचा. फोटोग्राफी करनी आती थी, एडिटिंग करनी आती थी, सोशल मीडिया चलाना आता था, लगा दिया फोटो. एंड वो 5 फोटो लगा के वेकेशन पे चली गई. एंड आई हैड नो एक्सपेक्टेशन, नथिंग. कुछ दिस इज वन बिलीव इन मी दैट इवन इफ आई गो टू ग्राउंड जीरो, आई विल बिल्ड माई सेल्फ बैक अप. ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर बहुत पहले से है. ये कुछ भी हो जाएगा, मतलब मुझे डर नहीं लगता. लाइक आई एम नॉट स्केयर ऑफ फॉलिंग, आई एम नॉट स्केयर ऑफ लूजिंग, बिकॉज आई नो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. होगा, आई हैव सम जो सबके पास होता है थोड़ा बहुत स्किल, उसको यूज करके दोबारा चली जाऊंगी. लाइक वेकेशन पे चली गई, मुझे ऑर्डर्स आने लग गए. लाइक व्हाट डू आई डू नाउ? आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दीज ऑर्डर्स टू कम. आई डिड नॉट हैव द पैकेजिंग मटेरियल, द वे टू शिप, हाउ टू सेंड दैट ऑर्डर टू दैट कस्टमर. जल्दी जल्दी कैंसिल करके आई केम बैक. आई डायल्ड अप नंबर्स, मुझे पैकेजिंग का कुछ ये दे दो, बबल रैप दे दो, कार्टन्स दे दो. एंड इमेजिन अक्षय, आई वाज सो लकी. वो रैंडम नंबर्स जो मैंने लगाए थे गूगल से, they turned out to be my vendors for the 4 years of the company that I ran. मैं ना कभी left देखा ना right देखा. Both these people, my packaging, my manufacturers, जो मेरे first थे तुक्का लगा के, I think they were all God sent. 4 साल तक उन्हीं लोगों ने मेरा business चलाया है. Because I was a first time founder. मुझे नहीं पता था कि कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे strategies put करते हैं. आई रिमेंबर रात के 2 बजे कई बार मुझे लगता था शिट, कल के लिए तो मेरे पास कार्टन्स ही नहीं है ना. वो डायल अप द नंबर और रात में कार्टन्स रेडी करवा के मुझे भेजता था. सो ऑरेंज स्काइज हैपेंड आउट ऑफ विम, आउट ऑफ माई ग्रीफ, and just something that I want to make it big. I want to do something extraordinary and I want to make my father proud. My mother was little scared that she's quitting a job, a secure job, but she supported me. My brothers were a little scared. I just bought a car on EMI and थोड़ा लाइफस्टाइल पे हम लोग अपग्रेड करके खर्चा तो बढ़ा ही लेते हैं लाइफ में. देयर आर सर्टेन ब्रांड्स दैट यू डोंट वांट टू गो डाउन टू. मेरा भी मतलब आई एम अ वेरी शौकीन पर्सन. माय ब्रदर्स लाइक, आर यू श्योर यू वांट टू क्विट और डू यू वांट टू लाइक डू इट फॉर नेक्स्ट 2-3 years, save up some money and then do it. Like अब तो कर लिया, I can't reverse it. But everyone supported. Nobody wanted me to take that step at that point of time.
because it was a vulnerable time, but everybody supported. बहुत ही मज़े में business start किया और बस it has been the most transformational phase business career decision of my life. बस बहुत अच्छा हो गया है. बस I don't think कि Orange Skies अगर नहीं हुआ होता, I would have even half of this person that I am today. That's great to hear. Like, I was surprised by the launch ki ye kya cheez hai. And then when I went through the orders and the posts, the reviews, I was like, okay, people are loving it and people are buying in numbers. So talk us about ki ye business exactly कैसा है. If anybody wants to start a new business based on crockeries, so उनके लिए क्या ये beneficial है या फिर इनका market कैसा है? जब मैंने स्टार्ट किया था 2021 अगस्त में, सो पीपल वर स्टिल इन दैट पैंडेमिक जोन, क्योंकि बहुत सारे वेव्स कोविड के आ रहे थे और वर्क फ्रॉम होम चल रहा था. तो घर पे रहने का एक नया, जो लोगों को पता नहीं था पहले कैसे होता है. मंडे टू फ्राइडे आप काम करते हैं, सैटरडे संडे बाहर रहते हैं, हॉलीडेज पे चले जाते हैं या दारू पीने बाहर चले जाते हैं. सो आपको पता ही नहीं घर पे रहना क्या होता है. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम पीपल स्टार्टेड स्टेइंग इन, एंड होम डेकोर का एक शौक शुरू हुआ था लोगों में. सो दैट वाज ऑन राइजिंग दैट टाइम. एंड जो सेंटिमेंट था फॉर होम ग्रोन ब्रांड्स एंड मेक इन इंडिया, वो बहुत हाई था. सो पीपल वर रियली ओपन टू स्मॉल ब्रांड्स, न्यू ब्रांड्स. तो मुझे उस चीज़ का एडवांटेज मिला. प्लस मैंने शुरू से एक चीज़ सीख ली थी या समझ ली थी कि मेरे पास ना ही बड़े ब्रांड्स जैसा पैसा है, ना ही टीम है. तो मैं उनसे compete तो बेवकूफ़ी होगी करना कि मैं उनके जैसा सोशल मीडिया क्रिएट करूँ या वेबसाइट क्रिएट करूँ. तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं कुछ अलग कर सकती हूँ. जो बिग ब्रांड्स हैं वो एक सुंदर सा सब कुछ क्रिएटिव बना के, रील बना के डालते हैं. मैं नहीं कर सकती, ना मेरे पास टाइम है. आई वॉज द सिंगल पर्सन फॉर द फर्स्ट ईयर. मैंने पैकेजिंग भी खुद ही की थी, मैंने सोर्सिंग भी खुद ही की थी, सोशल मीडिया, कस्टमर सर्विस, वेबसाइट क्रिएशन, मैनेजमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट, हर एक चीज़ मैंने खुद से किया था. तो आई यूज्ड टू वर्क लाइक 16-18 आवर्स अ डे. तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैंने कुछ क्रिएट नहीं किया, मैंने डॉक्यूमेंट किया. मैंने अपनी जर्नी एज इट इज डाल दी. लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, आई एम नॉट स्कैर्ड टू पुट माई सेल्फ आउट देयर वल्नरेबल. आई पुट माई सेल्फ आउट कि दिस इज माई स्टोरी. दिस आई नेवर प्रिटेंडेड एनीथिंग फॉर ऑरेंज स्काइज. मुझे सबको पता था, माई अर्ली कस्टमर्स, कि मैं 5 ही प्रोडक्ट लेके आई थी बेचने के लिए. ये मेरे डिज़ाइंस नहीं है, मैं सोर्स करके बेच रही हूँ. ये मैंने अपनी जॉब छोड़ी है. दिस हैज़ बीन माई पर्सनल लॉस्ट, हाउ आई लॉस्ट माई फादर. एंड मैं ये हूँ, मैं हर दिन अपनी शक्ल दिखाती थी लोगों को. एंड माई अर्ली कस्टमर्स बिकेम माई फ्रेंड्स एंड दे वर सो सपोर्टिव. कितनों के फ्रेंड्स नहीं होते इतने सपोर्टिव. एंड एक एक ऑर्डर पहुंचता था एंड पीपल यूज्ड टू सेंड पैराग्राफ्स of how much they love my journey, how much, I think more than the products, people fell in love with Orange Skies का story. So मैं every time I would go sourcing, मैं पूरा factory का दिखाती थी, artisans को दिखाती थी, and people would be waiting for it. मेरे हर एक field visit used to become like an event for all my customers also. कोई केरला में बैठा है, कोई बैंगलोर में बैठा है, कोई मुंबई में बैठा है, बट सब वेट कर रहे हैं कि मैं कब उत्तर प्रदेश जाऊंगी और कब वो फैक्ट्री विजिट करूंगी. एंड पीपल वुड लव इट. सो आई थिंक माई बिजनेस ऑल्सो क्लिक्ड so much because people could relate to it. And people, more like they liked your honesty. Maybe. They liked that I'm not trying to be perfect. And this brand is also not perfect. I was like, this is my journey. I want you to be a part of it. If I'm doing wrong, I will say sorry. You teach me. If I'm doing right, I would love if you support. So, कई बार शुरू में सामान जब फूटा चला जाता था, the customers never complained or even asked for refund, which was so shocking. वो मुझे फीडबैक देते थे कि मुझे कैसे पैकिंग करनी चाहिए थी, या फिर वो खुद ही डर डर के बोलते थे, आई लव एवरीथिंग बट ये वाला ऐसे टूट गया. एंड आई वुड ऑफर द रिफंड, बट they were like friends, yaar. I was blessed to have those kind of customers, and they would refer to their friends again कि ये ऑरेंज स्काइज का है. सबको नाम बहुत अच्छा लग गया, सबको मेरी स्टोरी रिलेटेबल लगी, सबको आर्टिसन से कनेक्ट होने लगे. So I think everybody appreciated the fact that this is not a perfect brand, this is not a perfect entrepreneur, and this is not a perfect journey. And
They're related because nothing is perfect in this universe. So it was a beautiful community that I was building. And जो अभी कोई कुछ शुरू करेंगे, so this has become a very competitive market now. Very competitive. Because I think I mentioned it on social media in one of my reel series that there is no moat in this business. Even more so now because the proximity to the manufacturing units to Delhi NCR is close. Secondly, it has become a very commercialized industry, the manufacturing industry. So whether you are in Bangalore wanting to start your crockery business or you're in Delhi or Kerala, आपके पास 3 दिन में सामान आ जाएगा, आपको विजिट करने की भी जरूरत नहीं है, वीडियो कॉल पे सब कुछ होता है. सो नाउ व्हेन देयर इज नो मोट, देयर इज नो बैरियर टू एंट्री, व्हिच मींस दैट लोग झुंड में शुरू कर रहे हैं अब ये बिजनेस. इसका मतलब आपके पास बहुत कंपटीशन है. अगर आपके पास पैसे कम है तो आप सेम डिजाइन बेचेंगे, बिकॉज जो मैन्युफैक्चरर बना रहा है आप वही लेके आएंगे और बेचेंगे. तो देयर इज नो स्टैंड आउट फीचर इन योर प्रोडक्ट. दे आर नॉट यूनिक, देयर इज नो यूएसपी. देन अगर वही सेम प्लेट 50 बिजनेस बेच रही है थोड़ा प्राइस इधर उधर करके, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव लॉन्ग टर्म? That should be the number one point that you should focus on. The strategy, how to make your story unique, how to connect with your customers. And I know the whole industry, the ceramic industry, is right now on meta ads. They're surviving on meta ads. Which is like, you're not creating a community of customers, but you are taking customers, like you're borrowing their borrowed audience. Meta ads se kar karke aap kab tak chaloge? So focus on community building, focus on an USP, and just see how you can not just ask your customer to buy once, but convince them to buy again and again. So repeat customer rate is very, very important. But for the very first thing is that how do you really stand out? How do you solve a problem? How are you making your customer's life easy or meaningful? How are you adding value? I think किसी को भी business शुरू करने से पहले इस पे ही focus करना चाहिए. Otherwise, you're just going to be a part of the crowd. So for many people, they might be feeling कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं regarding. So Smita runs Orange Skies business, जो कि एक ceramic जैसे इसने बताया regarding कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू बाय दी होम सेरेमिक्स और दी जो भी ब्यूटीफुल कप्स वगैरह होते हैं, प्लेट्स होते हैं. एंड शी वाज गोइंग सो गुड, लाइक यू रन योर बिजनेस फॉर लाइक 4 to 5 years. 3.5 years. 3.5 years, and you grow from zero to the top. Okay. 50,000 orders. 50,000 orders. Yeah. Okay. And not only she delivered the products like each and every state of India, Yeah. but people loved it. If Yeah. you're going to go and see the reviews even now, they're too good. But what happened? It got closed and you shut down entire company. Like people were, I was going through your social media posts and they were like, okay, why you did this? We were loving your posts, we were loving your products. Plus, जो एक ऑनेस्टी फ्रेंडशिप वाला फैक्टर था वो भी छूट रहा था. लाइक जो आपके दोस्त बन चुके थे, जो फैमिली बन चुके थे. प्लस एक बहुत अच्छा लगता था जब आपके वीडियोस में कभी कभी व्हाट वी हैव सीन इज दैट कोई ओल्डर लेडी बना रही हैं, तो लाइक यू मेंशन दी मेड इन इंडिया और द ग्राउंड लेवल वाले लोग काम कर रहे हैं. सडनली ये चीज़ छूट जाता है. सो आई वुड लाइक टू आस्क टू थिंग्स, लाइक ये क्यों हुआ, एंड सेकेंडली लाइक हाउ वाज देयर रिएक्शन? So I'll give you the most honest answer जो मैंने कभी किसी को नहीं दिया है, because I've always given the most reasonable answers to people, which is also truth, but it is the part truth. Because since you asked me to be very honest on your podcast, I'll be. The last, like from 2020 to 2024 till 2025, I think first quarter, life has been very transformational, both in positive and negative ways. So जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, लाइक आई टोल्ड यू, मैंने बहुत एक्साइटेडली अनप्लान्ड स्टार्ट कर दिया, जस्ट बेटिंग ऑन माई सेल्फ कि मैं कर लूँगी. एंड ऑफ कोर्स द कस्टमर सपोर्टेड, फ्रेंड सपोर्टेड, फैमिली सपोर्टेड, द डिवाइन सपोर्टेड. बहुत अच्छा ग्रो हुआ, सब कुछ हुआ. But like I mentioned, कि there is no moat in this business. There is no USP as such because it was a bootstrap business. So बहुत ज़्यादा competition बहुत इतना high था कि the designs were getting copied day in and day out, and storytelling was getting copied and everything. So I realized if I want to be an entrepreneur and be in this D2C game for the long term,
and really want to make a big brand and not just another company, तो मुझे एक बड़ा गेम खेलना पड़ेगा. And by that time, I had gained the confidence कि अब मुझे the game of D2C e-commerce, quick commerce समझ में आता है. Because of all the things that I have learned in the 3.5 years. उसमें मुझे समझ में आ गया है कि क्या क्रैक करता है ऑनलाइन और क्या नहीं करता है. तो मैंने गलतियों से भी सीखा और विन से भी सीखा है. Now do I want to do it for the next 5 years of my life? No. Because मैं बहुत heavily पैकेजिंग शिपिंग पे ब्लीड कर रही थी पैसे. मेरे प्रॉफिट मार्जिन नीचे आते जा रहे थे. इट वॉज स्टिल अ प्रॉफिटेबल कंपनी बट इट वॉज गोइंग डाउन. द कस्टमर्स वर लाइक दे न्यू कि ये मग अगर ऑरेंज स्काइज का डिज़ाइन है सो 5 कंपनी आके उसको कॉपी कर रही है 100 रुपये कम करके. कस्टमर्स का भी अटेंशन ट्रस्ट सब कुछ डिवाइड हो रहा था. सो आई हैड सीन ऑल दीज लूप होल्स बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री extensive business that it was. Warehousing was expensive. मैं every time I would want to scale up, मुझे बहुत heavily invest करना पड़ता और उसके लिए शायद burn करना पड़ता पैसे. Secondly, मेरा जो packaging shipping RTO damage था because of the nature of the products, वो भी on the higher side था compared to a business जिसका carton size या product size small और non-fragile होता है. तो those were all problems that I as an individual, I as an entrepreneur did not want to solve. And I was like, I don't want to get into it. Orange Skies, I treated it as a warm-up. And I felt that ये मैंने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है, but I want to build a meaningful brand now. And it's time to say a goodbye to it with all due respect, with all the lessons which I will carry with me, and time to build something. And मैं जितना लंबा उस पे जाती ना, मैं अपना वो नेक्स्ट उतना ही डिले कर रही होती. मुझे सेरेमिक्स में आगे अपनी लाइफ में नहीं बढ़ना था. और मुझे जो मेरा सपना है, like I always discuss with my friends, and since the day one of Orange Skies, I wanted to build 100 crore brand. And I've said, I think सबसे ज़्यादा मैंने किसी को ये बोला है तो that is my eldest brother. Negatively मुझे 100 करोड़ का ही brand बनाना है. And we were very positive that we will be able to do it in Orange Skies. But we realized that it's not possible. And instead of crying over it, let's just make a smart move and do that. That was the strategic decision and reasoning. The second was that I was also a little bit burnt out. And I was the solo founder and the first time founder. I was carrying a lot of load on my shoulder. And जैसे कि मैंने बोला, मैं 16-18 hours काम कर रही थी. बहुत कुछ हो रहा था लाइफ में. Also going through some personal emotions and इतना hectic schedule. Gym छूट गया. Gym has been a very important part of my life ever since like I was 17-18. In that period, I gained a lot of weight, like 17-18 kgs up I had become. क्योंकि मैं सिर्फ काम करती थी. Friends बुला रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगी. Family function है, मेरे पहले ही नो हो जाता था. दिवाली के दिन भी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, होली के दिन भी मैं ऑफिस में बैठी हूँ, बर्थडे सेलिब्रेशंस में मैं नहीं जाती. ट्रिप्स पे तो मैं भूल ही गई थी what it is like to take a trip. I did not take a single vacation for the first 3 years. I was just working. And there was, I was in a relationship that also I saw crumbling down in front of my eyes. It was a 9-year-long relationship. So, wo bhi khatam ho gaya. So that created a void in my life. And we were very involved into each other's life, about to get married. So that got shattered. So that burnout, turned out to be very positive in my life, ironically, because it made me pause. And for the very first time, I was not hustling. And by that time, fortunately, I had a team to take care of the operations. तो मैंने सोचा कि मैं 3 महीने का पॉज लेती हूँ. Of course, I was working, but I was not hustling to that capacity. And my team was there to fulfill the orders, to take care of all the, back end and everything. वो हो रहा था, customer service भी हो रहा था. I had a team in each department. I had a team member in each department. So, उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ सोचा. फिर मुझे लगा, that is when I decided
कि मुझे ये नहीं आगे करना है, क्योंकि I already had a business idea back then, which was more into what I love, which I feel will be solving a real life problem, which has a moat, which will have a first mover advantage, and which I'm extremely hopeful will grow into a brand, which will have its own products, its own branding, and first of its kind. So it just felt like the right most thing to do. Ki now let's take another bet on myself and do it. Well, I think that's a very important message for anybody listening. Like, I at least learn from you this way right away. Like, कि if you want to try something new, you need to know कि when to stop, right? And sometimes you feel emotional कि यार ये मेरा business खुद का खड़ा किया हुआ है, and I have to stop it because of the XYZ reason. But also you have to see the other side of the story, that there's something big she's planning, and this is how it gonna take the insights, right? You look around and you see, okay, business तो अच्छा है, but like you dream about the 100 crore thing. So according to you, even if I invest 24 hours of my time with full honesty, will be not hitting that. So dream has to change. This is what the entire motive is, that लाइफ में कभी कभी क्या होता है, जैसे व्हाट आई डू कि आई कीप ऑन चेंजिंग द ड्रीम्स कि यार वो एक मुकम्मल करके आगे बढ़ जाओ, वरना व्हाट हैपेंस कि वो स्टक कर जाता है, यही पूरा करना है, यही पूरा करना है, एंड यू इन्वेस्ट योर ऑल एनर्जी टू अचीव दैट. कभी कभी क्या होता है, वो आपको मिल जाता है, ट्रू, कभी कभी वो नहीं मिलता है, तो होता क्या है कि आप उसके पीछे इतना लग जाते हो ना कि वो नहीं मिलता है. सो व्हाट यू हैव टू डू, थिंक, टेक अ ब्रेक, स्टॉप एंड रीस्टार्ट. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शी हैज डन. एंड आई थिंक कि शॉकिंग तो ऑफकोर्स बहुत लोगों के लिए था, मेरे लिए भी था, कि क्योंकि समझ नहीं थी ना, कि हम लोग जुड़ जाते हैं इमोशन में, अरे वाह क्या काम हो रहा है, बिजनेस ऑर्डर्स आ रहे हैं, सीम्स एवरीथिंग इन अ गुड नोट कि यार लाइफ इज सो मच ग्रीनर, वहाँ पे तो बस अच्छी चीज़ें हो रही हैं. बट द इंटायर कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस पार्ट वॉज ऑल अबाउट कि आपको पता होना चाहिए व्हेन टू रीस्टार्ट इन टर्म्स ऑफ योर न्यू फील्ड, न्यू ड्रीम्स, न्यू बिजनेस आइडियाज. ऑफकोर्स शी इज़ बाउंड टू फेल, वी आर बाउंड टू फेल, बट जो नया स्टार्ट का तरीका शायद ऐसे ही कर सकते हैं आप कि यार सबको सरप्राइज कर दो when they expect not to, but surprise them right now. And वो चीज़ आई थॉट कि काफ़ी ब्रेव था अगेन, कि यार फिर से मम्मी का सवाल होता कि यार बेटी तुम तो 4 साल बिजनेस की. I think, touch wood, I'm the luckiest girl, because my mother, and when my father was alive, then my father as well, they have this very weird faith in me कि I can do no wrong. So उनको, even though they will naturally be slightly worried कि I hope it works out, will it work out, but वो कभी मुझे question नहीं करते. In fact, even my brothers, everybody just knows ये figure out कर लेगी. तो I think little bit of confidence comes from their confidence also, कि अब पे इतने लोग bet कर रहे हैं, और मैं कुछ भी होता है लाइफ में ना, my mother is like, you are so brave, you can't give up. So it's like, why does she think, no, I don't want to be brave in this moment? But I think my mother has never questioned me, like never questioned me. She's like, I know you'll figure it out. I know. Tum bas kar lo. And even today, now that I've hit 30s, I think I won in life big time, because my mom's biggest worry is my career and not my marriage. And because traditionally it happens, like you pressure aa jata hai wo family se, and your career takes a backseat for them at least. And my mom is like, every day she will call me and she'll be like, काम कैसा चल रहा है, second वाला business कब शुरू हो रहा है, वो कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है. तो and like बस काम अच्छा चलना चाहिए, और काम करो, और काम करो. So I don't think we talk about anything else but my work. So it's, I think my mother she is queen. So Smita, like we have got to know about your life and life stories, from your journeys from the ITs to your business and from its crash to success. Let's talk about what's next coming from you. Like you talked about the second business. What's in your mind? Tell us about that. So it is a stealth startup, so I cannot give the entire idea right now, but I began this podcast by saying that I'm in this golden phase of life. So I think I'm privileged to have this transitional period
where I have the peace of mind and the clarity of mind to think strategically and not with a foggy mind. So जब मैंने पूरा वाइंड अप किया ऑरेंज स्काइज, आई यूज्ड टू गो टू वी वर्क, और मैं हर दिन 8-9 घंटे वहाँ स्पेंड करती थी और मैं बस सोचती थी कि मुझे अब क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है. मेरे पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज आए एंड आई गॉट सो इंटरेस्टेड इन अ लॉट ऑफ फील्ड्स that I first started my coaching business. So, because I used to get a lot of questions from other small business owners, and because I found myself in their spot sometime like a few years ago, मुझे उनके questions बहुत relatable लगते हैं, और कई बार according to them they find me very useful, the kind of tips that I share, the kind of strategies that I share with them. So for now I'm focusing a lot on my coaching business as well, so that my goal is that जो mistakes मैंने किए हैं वो other bootstrap business owners in their early stage do not do it. And if I can help even 5 businesses scale up profitably, I will be very, very happy, especially women owned. Like, I'm a girl's girl, so I feel so proud when a woman starts her business. So I want to, like, I will support you. I will never see you as a competitor. I will always like share the most useful strategies. I'm friends with a lot of women who own ceramic businesses also, yeah. And they messaged me, like a lot of people messaged me, reached out to me when I announced the shutdown. And there were a few from the ceramic industry. And they're like, we've always followed your journey. We're like, what happened? And now we are in touch. And she's like, I'm going through this. Like, can you help me? Like, yeah, this is what I did on Orange Skies. Now you can do it. So I think I'm quite passionate about the coaching business, but that is always going to be a side thing. Mhm. My main business is going to be starting early 2026, and it is some sort of femtech, female technology business. Like I told you, I'm a girl's girl. Whatever I will build, it's going to be for women. They're going to be at the center. So that is that. And we are doing a podcast for that too, right? Yes. Yeah, we will So do will it. we Yes. announcing that on my podcast? Do you promise me that? I do. Well, Smita, like I would like to people know ki why we are sitting here. Ki we are not promoting any brand for sure. We are not promoting any business or किसी भी particular sector को. What I'm promoting here is the courage of a girl, जो कि मेरा concept भी रहता है, like to bring out the real idea of survivors. जो channel है Better Breakthroughs, it's called Beta is a fighter fish. Okay, so what I have tried to take that from that fish is that कि वो fish अकेली रहती है and she fights the adversity of life, right? कि कभी पानी ना मिले, खाना ना मिले, she tries to manage her life and she stays alone and she is happy, she dances, and breakthrough is of course coming over it. So I thought कि your journey and your life has been the similar thing, okay? And this is for the people. ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं इस वक्त या फिर वो हैं, बट आई रियली वांटेड टू कैप्चर योर जर्नी, व्हाट यू हैव बीन थ्रू, व्हाट यू हैव अचीव्ड. आई विल नॉट से अबाउट पीपल आउट देयर जो कि वट एवर दे जज, मे बी पीपल विल लाफ एट यू, जज करेंगे, वो चीज़ ऑब्वियस है. आई फील वाई आई एम हियर बिकॉज आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम योर फैन of your work, of your courage, of your strength, what you've been through and where you came, like कि क्या क्या achieve किया time के साथ. I follow you very closely कि what you do and how you change your life. You talked about gym. I am a big fan of your gym. Like whenever you post something regarding your lifting weights, I like it. कि I don't reply to your any, but when I see you doing the extra rep, I feel so proud that she's pushing hard. And मेरा एक concept था कि to talk about the courage in women. कि हमने इस शो को स्टार्ट किया था लाइक कि जो कल के मैच हुआ था, आई वाज सो अमेज्ड. आई वाज एक्चुअली ट्रैवलिंग, तो हम मैच देख रहे थे बैठ करके, तो इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि यार ये प्लान नहीं था मेरे इंट्रोडक्शन में कि ऐसे इंट्रोडक्शन करेंगे, हम तो सिंपली बात करते हैं, रिया की गेस्ट ये है वो है. लड़कियां रो रही थी एंड लोग, उन लोगों में से हम भी थे. आई विल बी वेरी श्योर कि हम टीवी बंद कर चुके थे और उनमें से स्टेटमेंट ये मेरा भी था कि यार ये हर बार का इनका वही है क्योंकि लड़कियां हैं, और गलत प्रूव हुए. और कुछ गलत प्रूव होना अच्छा होता है, और ऐसा गलत हम बार बार होना चाहेंगे क्योंकि हम अंडरस्टिमेट करते थे कि यार एक डिसअपॉइंटमेंट कह लो. अंडरस्टिमेटमेंट तो ये नहीं है कि हम उनको वो डिजर्विंग है तभी वहाँ पे, बट एक डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता कि यार खेलते हैं जीतना चाहिए, नहीं जीत पाए. बट व्हेन आई सॉ दोज गर्ल्स रनिंग एंड क्राइंग, आई वाज सो अटैच्ड कि यार क्या कर दिया उन्होंने. ये फाइनल मैच नहीं था, दे वर चेजिंग 340 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, प्लस इन लोग का स्कोर 50 पर 2 हो चुका था.
एंड आई वाज इन नो होप कि यार हरमनप्रीत कौर इतना रन मार देगी या फिर वो जेमिमा रोड्रिगेज विल स्कोर अ सेंचुरी एंड इवेंचुअली विन द हिटिंग रन्स एंड आई वाज लाइक ओके देखते हैं क्या होता है. बट व्हेन आई सॉ दिस जर्नी क्राउड चले गए थे. They came back, they turned on the TVs again and they won the match and they were celebrating like कि उन लोगों पे तमाचा है ना कि जो लोगों ने उन पे बिलीव नहीं किया, जो लोग उन पे हंसे हैं, जो लोग उन पे डाउट किए हैं इंक्लूडिंग मी. एंड समटाइम्स इट्स सो गुड टू बी एट द रॉन्ग साइड बिकॉज अगर आप गलत हो जाते हो ना, कहीं गलत साबित होना कभी कभी अच्छा होता है. मेरे से लोग के लिए हुआ है, आई ओपनर था मेरे लिए कि यार हम गलत लोग पे डाउट कर रहे थे, बट वो डाउट नहीं था, वो एक डिसअपॉइंटमेंट था. लेकिन दे प्रूव मी रॉन्ग कि नहीं, और वो रॉन्ग का वजह क्या था पता है? करेज एंड सेल्फ बिलीफ. दिस इज आई रिलेट टू यू इन योर जर्नी. We might not have spoken to each other. We might not have shooting this podcast with you because your journey could have been different if you had followed the steps of other girls, or I will not label that thing, but what people usually do, like you talked about here, they want to dress up, have a good relation, they marry and have their own life. But you fight. You kept on fighting, like from your father's loss to a new business to again leaving that to start something new. These requires courage. इन सब के लिए हिम्मत चाहिए होता है. एंड मेरा मैसेज ये है शो को बुलाने का. हम लोग दिल्ली में शूट कर रहे हैं. आई केम फ्रॉम पटना टू टॉक अबाउट दिस थिंग बिकॉज आई वॉन्टेड टू लेट पीपल अश्योर कि हैव सेल्फ बिलीफ अमंग योर सेल्फ. चाहे वो कोई भी हो, लड़के हों, लड़कियाँ हों, कोई भी हों, द टाइम इज़ ऑलवेज राइट टू स्टार्ट. फॉर मी ऑल्सो, लाइक इट टुक मी 9 years टू राइट माई फर्स्ट बुक. 2011 में ही सोच लिए थे बुक लिखना है, स्टोरी था, लेकिन वो हाथ कांपता था कि कोई और आके लिख देगा. हम कितना ढूंढेंगे, कोई ट्रांसलेटर मिल जाएगा, पे करते थे बैठ करके. बट इवेंचुअली हुआ कब? जब व्हेन आई डिसाइडेड टू राइट इट. Yeah. एंड द इंटायर कॉन्वर्सेशन ऑल अबाउट यू हैव टू स्टार्ट समवेयर. इमोशंस होंगे, यू विल बी समबडी वेरी लॉस्ट इन योर लाइफ, एंड मे बी लॉस भी है लाइफ में, या फिर फाइनेंशियल इमोशन, हर तरह का लॉस होता है, बट यू ट्राई टू ओवरकम. एंड मेरा मैसेज इसलिए था, वाई आई हैड योर नेम इन द लिस्ट, बिकॉज आई वॉन्टेड पीपल टू शोकेस की करेज एंड सेल्फ बिलीफ इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जाता है. एंड दिस इज वॉट आई लाइक्ड अबाउट यू. आई टोल्ड यू कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम योर फैन. आई नेवर स्पोकन टू यू पर्सनली कि एज अ फ्रेंड आई एम टॉकिंग हेलो हाय. आई स्पोक एज अ फैन एंड आई रिमेन दैट बिकॉज मेरे अंदर वो चीज़ चेंज नहीं होता है. व्हेन आई सी यू ग्रो आई अप्रिशिएट इट. व्हेन आई सी यू सैड आई कम क्लोज टू यू कि यार हुआ क्या, if I can help something like that or not. And there's a connect also. This is why we are sitting here कि एक emotional connect हो जाता है इंसान का कि I feel मेरा and आपका journey has been quite parallel in terms of what you're trying to achieve, what I'm trying to achieve. Irrespective, I will not say entirely the similar, but yeah, like you keep on trying the new things. My thing is that I want to work. I don't want to sit like ऐसे ही बैठ के time pass करना. I could have एक अच्छा जॉब है एंड आई एम डूइंग सो गुड इन अदर थिंग्स लाइक आई राइट बुक्स ऑल्सो ट्रैवल. तो मुझे लगता है कि लाइफ तो इतना ईजी है, बट आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग बिकॉज आई वॉन्ट टू ब्रिंग आउट द स्टोरीज. एंड द स्टोरीज जो कि इस पॉडकास्ट से 2 लोग को भी चेंज होता है ना, तो वी हैव डन जस्टिस टू द एपिसोड. सो ओवरऑल आई वुड लाइक टू से कि योर जर्नी हैज़ बीन रियली appreciable. Your father is there for you, and no matter what God has been there for you. You might not have went to the temple, but then might have he has come to your house. That's very sweet. Thank you. ऐसा भी तो हो सकता है कि वो घर पे ही रह रहे होंगे कि चलो बेटा हम ही आ जाते हैं. But I actually did step into a temple just few months ago for the first time. Banaras gayi thi main, and I went to Kashi Vishwanath. That was the first time after 5 years that I entered a temple. Yeah. Look, usually क्या होता है ना कि इमोशनल चीज़ें इंसान को कनेक्ट करने में हेल्प करता है. And why I asked you to talk about it, because that will make you feel more comfortable, more stronger, and लोगों के लिए भी मैसेज जाएगा कि अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ. Absolutely. And be it any business, any field in my life, और कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे it's never too late to start. And I am one of those guys who has tried this thing कि यार कुछ भी नया करने के लिए it's never too late. Plus एक मैसेज ये भी है कि keep on changing your dreams, like you talked about. Evolving, yeah. Yeah. And dreams evolve, yes. For me also, I had my dreams कि 30 साल तक ये करना है, फिर वो चीज़ बंद होना Yeah, चाहिए, yeah. क्योंकि नया ड्रीम्स नहीं आएगा तो नया एनर्जी नहीं आएगा. Absolutely. And we change as individuals. So हमारे goals and dreams सब change हो जाते हैं, which is a wonderful thing as It's a well. wonderful thing. And so
I think this was very important to talk about the journeys and the जो courage and belief in women, जो हमारा thumbnail भी जाएगा वो शायद यही जाएगा कि if self belief can change everything, it can do wonders. And मेरा एक बहुत important सवाल रहेगा आपसे, like how do you personally feel कि where लाइफ में आप किस पोजीशन पे उस वक्त पर्सनली, लाइक कि हाउ यू सी योर सेल्फ राइट नाउ, कि कैसा फील होता है खुद को देख करके व्हेन यू वेक अप, सी योर सेल्फ इन द मिरर एंड you think, okay, this is me now. Talk us about that. I think, Akshay, I hope I don't come across as someone snobbish, but I respect myself and I love myself a lot. So even this decision of shutting down a profitable and growing business came from self-love, because it wasn't serving me as an individual as well as a professional. तो एक hard decision था, which shook my family, which shook some parts of me, which shook my customers, that community. But वो खुद के रिस्पेक्ट और प्यार के लिए ही था, क्योंकि वो मेरे ड्रीम्स को सर्व नहीं कर रहा था, मेरे गोल्स को नहीं, और मुझे आगे ग्रो भी नहीं कर रहा था जितना उसका जो एक टाइम था ना, जैसे कहते हैं सम पीपल कम टू योर लाइफ टू सर्व अ पर्पस, और वो जब पूरा हो जाता है दे लीव. Now it's on you whether you keep crying over them or you let them go beautifully and learn your lesson. Orange Skies was that. It came, it transformed, it taught me entrepreneurship. I knew nothing about business here. मुझे तो ये भी नहीं पता था gross margin, profit, net margin, EBITDA क्या होता है, product market fit क्या होता है, moat क्या होता है. I knew nothing. So it taught me. It was my teacher, my biggest mentor. I respect that, but I let it go because of that. So when I look at myself, I feel मुझे आगे बहुत काम करना है. Like this is just the beginning, and I've got the right training. मुझे वो best training, best MBA मिल गया है. But now the journey starts now, and I also I care about my mental and emotional being way more than I used to before. That of course happened a lot about after the incidences, but in 2025 specifically मैंने अपने emotional और mental health पे बहुत 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 काम किया है. So for that I feel proud of myself, because the first time I went into therapy, it took 2-3 sessions, a lot of emotions were bottled up. तो मैं तो बहुत खुशी खुशी चली गई. I'm going to speak to somebody today because I'm somebody who does not ring their friends or family members to cry. मुझसे नहीं हो पाता है. So when somebody asks me क्या कैसी हो, मेरा तो आंसर होता है बहुत अच्छी हो. So what happened when I went to therapy, my therapist told me, I'm so proud of you because कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है बट वो आना नहीं चाहते हैं because they are in denial. And जब बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं तो उनके फ्रेंड्स और फैमिली उनको पुश करके लेके आते हैं, खींच के, और तब तक बहुत सिचुएशन खराब हो चुकी होती है. So you are coming to me to talk when you're just feeling something is off, which is commendable. And I know there's a lot of stigma around mental health and nobody wants to go to a therapist, nobody wants to feel that they're mentally ill. ऐसा कुछ नहीं होता है. We all are humans. Life is tough. Life is sometimes unfair. हो जाती है emotions bottle up. So I think I feel most proud of myself for pulling myself out of all dark times that life has thrown at me and just choosing happiness over everything else. So this is the best phase of my life. I am the happiest that I've ever been in the longest time. I feel confident, fulfilled. I feel life is so beautiful and it has so much to offer. Life has also been very, very kind to me. A lot of times I've messed up and people have forgiven me. Life has forgiven me. And life has given me second, third, 4 chances, 5 chances. So I feel grateful. I feel blessed. And I'm really excited and looking forward to all new things that is about to come. And how about the fitness you talked about? You're in a gym lover. Yeah. Talk us about the fitness thing, how it helps you personally. Gives you a lot of confidence, especially as a woman. I can't talk about men. You would know about that, what it brings to you. But as a woman, taking care of yourself makes you a different person altogether. Because it teaches you to prioritize over yourself, over everything else. क्योंकि क्या होता है ना कि women, they
they're always playing multiple roles in life. आप एक ही सेम टाइम पे आप एक डॉटर भी हो, आप किसी की वाइफ भी होते हो इफ यू आर मैरिड, आप एक सिस्टर भी होते हो, अगर आपके पास पेट है तो आप एक डॉग मॉम भी होते हो, आपके पास जॉब है, आप एक एम्प्लॉय या फाउंडर या एंटरप्रेन्योर, वट एवर योर प्रोफेशन इज, आप बहुत मल्टीपल रोल्स, लाइक मेन दे स्टिल कंपार्टमेंटलाइज. आप जब ऑफिस में होते हो you're respected for that and you're expected to just work. You come back home, आपको खाना मिलता है. Like still it happens in 90% of the cases, right? You're served. You're respected कि वो पैसे कमाने जा रहा है. But a woman is there, she's still expected घर आके she'll manage that, right? तो आप इतने ज़्यादा all over the place होते हो ना कि हमेशा लगता है spending that an hour in the gym is being selfish. Or is like compromising on other areas of life which demands your attention. But to shut that voice for that 1 hour, 90 minutes, whatever, if you start doing it for like even for 7 days consistently, you'll feel like a queen and you'll feel like, I respect me. That feeling comes, I respect me. And then of course that strength training and all of that, that also helps with mental health. It has like scientific studies say that it helps you with your depression, anxiety, and also byproduct is looking good, and everybody wants to look good, right? And you feel having more energy. You feel like कल जाके और भी weight उठाना है, PR मारना है. So it becomes a lifestyle, yeah. It's like gym's such a beautiful place. मैं कभी नहीं मिस कर सकती. I love it. I think like all women should go to the gym. That's the message. And how about you talked about your pet? Yeah. I see your pet Google. Google, yeah. Talk about him, like Oh my how God. he has been a blessing to you personally. I've seen you travel places, and he's the most common partner I have seen. Oh my God. The prominent one. He knows how to pose. He Yeah, knows yeah. how to stare when he looks what she is trying to do. Yeah. ये कर क्या रही है आज, फिर से सज रही है, कुछ कहीं जाने वाली क्या है, अकेले हूँगा मैं फिर से. हाँ. So talk about कि वो कैसा आपको हेल्प करता है लाइफ में having a pet. गूगल मेरी पूरी लाइफ गूगल के अराउंड रिवॉल्व करती है. आज मुझे अगर इस पॉडकास्ट के लिए आना था तो उसका आफ्टरनून में वो क्या खाएगा मैं वो देख के आई थी. रात में क्या खाएगा आई टोल्ड माई भाभी ये दे देने के लिए. वो इवनिंग वॉक के गया होगा कि नहीं, दैट्स ऑलरेडी इन माई हेड राइट नाउ. सो गूगल, लाइक आई ऑलवेज टेल while having conversation with my close ones, लाइफ में जो सबसे ब्यूटिफुल चीज़ें होती है ना, दैट इज मोस्ट अनप्लान्ड. एंड वो आप प्लान कर ही नहीं सकते हो. दैट इज यूनिवर्स विश फॉर यू. सो आई यूज्ड टू बी वेरी स्केयर ऑफ डॉग्स एक्सट्रीमली. कि मैं घर के नीचे अगर 4 कुत्ते हैं, आई वुड कॉल माई पापा कि नीचे आओ, मैं तो नहीं आ सकती, आई कांट क्रॉस दिस. आई यूज्ड टू बी सो स्केयर ऑफ डॉग्स. सो वन फाइन डे माई ब्रदर calls me and is like, we're getting a pet home, a beagle. And both my brother and bhabhi, they have night shift because they work US timing में. तो हमारे पास ऐसे कुछ था कि तुम रात को रख लेना, दिन में हम रख लेंगे, because my parents were so against having a dog at home, so against it. Like हम तो टच ही नहीं करेंगे. तो it was a surprise for them. एंड मुझे बस ये आइडिया थोड़ा एक्साइटेड लग गया. मैंने गूगल किया, बीगल पपीज और ये सब क्यूट लगते थे, पर मुझे वैसे भी लगा इट्स गोइंग टू बी डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर लेंगे. सो ही गेट्स गूगल होम एंड दिस 42-day ओल्ड पपी वॉक्स इन क्या गोदी में था मेरी भाभी के, विद अ ब्लू रिबन. मुझे नहीं लगता मैंने जिंदगी में किसी से ऐसे प्यार होगा. आई लुक्ड एट हिम एंड इज लाइक लाइफ चेंज्ड. And he was sleeping on the floor. I lie down on the floor, just staring at him. It's like, ये क्या है? And he peed. And my mom was little upset. Like, I'll clean. मैं जल्दी से साफ करने चली गई. So वो इतना ज़्यादा close हो गया ना कि वो धीरे धीरे बस मेरा ही dog बन गया. And he, मतलब, I remember when he came, he was diagnosed with kennel cough. So बहुत छोटा पपी था. 1-2 डॉक्टर ने ये भी बोल दिया पपीज का कुछ कह नहीं सकते हैं एंड कुछ भी हो सकता है, वी कांट रियली गारंटी. एंड आई क्राइड सो मच, आई क्राइड द होल नाइट. आई वाज लाइक नो. फिर मैं उसको ऑफिस में मैं मेल लिखती थी, माई पपी इज नॉट वेल, आई एम लीविंग अर्ली. एंड like I told you, the people were really great and they were very empathetic. So I used to go, मैं उसको द्वारका से लेके जाती थी जीके, और हर दिन उसका ट्रीटमेंट होता था. ये करते 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 we grew really close. And on the day I lost Papa, he was the first thing I came back home from the hospital and hugged. And he had sensed it already.
क्योंकि वो पापा को ऑब्जर्व करता था एंड ही हैड वेंट क्वाइट अक्षय फॉर द पास्ट लास्ट 7 days. ना वो खेलता था ना वो बीगल्स आर लाइक वेरी हाई एनर्जी डॉग्स, तो हमेशा कूदते रहते हैं. पपीज में तो लाइक अनकंट्रोलेबल, बट वो ना खेलता था ना किसी चीज में इंटरेस्ट दिखाता था, वो सिर्फ पापा को देखते रहता था. वी couldn't of course understand that point of time, but now in retrospect we know what he tried to convey something. So he understood, he was there, he has been there with me in the best days or in the worst days. मेरे सारे बिजनेस के खराब डेज भी आके मैंने उसको बताए हैं, बेस्ट डेज भी उसको बताए हैं, बेस्ट वेकेशंस भी उसको लेके गई है. जब नहीं भी, when I was losing money, he was there with me. When I was earning a lot of money, he was there with me. He understands me. He's very protective for me. Like, if I'm wearing something different, for example, sari, if somebody comes close to me, he'll attack. But like, अब ये तो कुछ अलग सी लग रही है. So he's very protective. He's very loving. He understands all of my emotions. उसको पता है लेफ्ट वार्डरोब अगर खुलता है तो वो जिम जाती है क्योंकि वो जिम के कपड़े होते हैं. राइट वार्डरोब खुलता है तो ये आज बाहर जाएगी, देखना शुरू कर दो, लाइक यू सेड. सो ही प्रोटेक्ट, लाइक इफ आई गो बैक होम लेट रात के 1 बजे, वो गेट पे ही मिलता है. ही विल नॉट स्लीप टिल आई रीच होम. So he's the most beautiful blessing of my life. He's my son, I always tell everyone. I think he was born for me and I was born for him. It's like not like a dog or human relationship. He's my soulmate. I can understand each and every word of yours because, like I mentioned, I had the dog, and the emotions what we share is God. something very special. And No human or two human bond it's can be like impossible. that. It's It's impossible. impossible. And I would not like to talk because I usually get emotional when I talk about dogs because I know. and it's something I not like to talk about. It's very personal. Plus, anyways, so we are about to close this episode, which we shot around, and whatever we spoke is all about the courage, strength, and this is your camera. I want to talk about I want you to give a message to all the young ladies, young girls who was dreaming about doing something different, who's afraid of quitting a job and thinking about choosing a new career. क्या पता मेरे अंदर एक डिज़ायर है, आई कैन बी अ नेक्स्ट फैशन मॉडल, बट एक जॉब का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर उसको रोक रहा है कि मत करो, क्विट नहीं आगे बढ़ पाओगे. यू आर द इंस्पिरेशन, दे आर द सीकर. कैमरा इज योर्स. जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा ने जब एक बिजनेस स्टार्ट किया था तो एक उनके बिजनेस पार्टनर थे हु वाज इन दिल्ली, लिटिल हाई फाई, एंड मैं बचपन से ही बहुत लाउड पर्सन हूँ. सो आई टॉक लाइक विथ फुल एनर्जी एंड आई विल बी लिटिल लाउड. आई एम नॉट अ वेरी, क्या ऐसे, आई डोंट put myself in a box that because I'm a woman I need to be in a certain way. I am who I am. It's like that. तो मैं बचपन से ही ऐसी थी. So I said something, I don't remember what, I was really small, and he commented on me that तुम लड़की हो, थोड़ा softness अपने अंदर लेके आओ और थोड़ा धीरे बात करो, अच्छा लगता है. लड़कियों को इतनी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए. And for the very first time, somebody, commented on me because my parents allowed me to be myself all the time. मुझे बहुत बुरा लगा, बहुत 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 बुरा लगा कि, asking to a young girl that you're not acting like a girl. What does that even mean? It feels bad, I cried a lot. And my parents were like, just forget it. Maybe that is his way of seeing girls. You don't need to be listen to him or change yourself, just be. But वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था और इतने साल हो गए, बट मुझे कभी कभी याद आता है. क्यों याद आता है? बिकॉज एक तो हम कुछ भी करें ना, फॉर विमेन वी आर ऑलवेज जज्ड. हम अगर काम कर रहे हैं तो हमें कुछ लोग जज करेंगे कि इंस्टेड ऑफ मैरिंग और फोकसिंग ऑन द फैमिली, ये तो हर रोज बैग उठा के चली जाती है. अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो लोग हमें जज करेंगे, अरे ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है, कुछ तो कर लो, कब तक तुम अपने हस्बैंड के पैसे पे रहोगी, और शी मस्ट बी अ गोल्ड डिगर. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट whoever you are, if you're a woman, you will be judged. And because since our childhood, since our foundational years, we are so judged that एक तो पूरी दुनिया हम पे डाउट करती है और सेकेंडली उसकी वजह से हम खुद पे भी डाउट करते हैं. So
first thing is to fight that self-doubt, because you can't fight the external doubt. That will always exist. जब मैं अपना business build कर रही थी and when I was running Orange Skies, like I told you, my family is very supportive, but they're not on the face कि अरे तुम्हें help चाहिए. They're not like that. They let me be me. They know I will handle it. तो जब मैं वेयर हाउस में कई बार रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे जाती थी, इन्वेंट्री आता था, भर भर के 3-4 ट्रक्स आते थे, मेरी टीम होती थी, बट जो मेरे सराउंडिंग वेयर हाउसेज होते थे वो मुझ पे कमेंट करते थे हमेशा कि आपके कोई हस्बैंड नहीं है, आप अकेले हैं, लाइक नो आई एम नॉट मैरिड, तो भाइयों को तो आना चाहिए. तो दे वर लाइक ये कैसी लड़की है यार, ये 2 बजे पूरा मेल डोमिनेटेड वेयर हाउस एरिया है, एंड शी इज देयर. सेड बट आई हैव अ वंडरफुल टीम हियर. मैं बस यहाँ खड़ी हूँ, राइट? मैं थोड़ी कर्टन्स उठा रही हूँ या कुछ रिस्की गन लेके खड़ी हूँ. यहाँ पे इतने कैमराज हैं, मेरे पास खुद की गाड़ी है, मेरा घर 15 मिनट दूर है, क्यों कोई आएगा मेरे पास? सो इंस्टेड ऑफ seeing that as something good, they were judging me constantly. And throughout my journey, I've been judged in how, especially by men. So much. When I started driving, I was so judged on the road. Even though I was the only one following the rules, but फिर भी सारे लड़के red light cross करते हुए जाएंगे, but वो आपको ऐसे से करके जाएंगे. It has become like a thing. If a woman is driving, they will judge you. If I'm in the gym, मैं कोई भारी डंबल उठाती नहीं हूँ कि 4 लोगों की नजर आ जाती है. So you're always judged. I have been judged for not doing cardio and doing weight training also. कि मतलब why are you doing? You will start looking masculine. Business कर रहे हो तो शादी क्यों नहीं कर रहे हो? मेरे मम्मी के कुछ friends हैं society में. So self-doubt is so omnipresent. Sorry, the external doubt is so omnipresent कि आपको the only thing that you have to fight is self-doubt and just say fuck off to the and just mute it, but say fuck off to the outside world. And secondly, the only tip that I will give you, because I know everyone who's watching is smart enough, that never be scared to take up space, because we are told to compromise since our childhood. Always compromise अच्छी चीज होती है, right? ऐसे सिखाया जाता था. Compromise, tolerance अच्छी चीज होती है. तरह से be have zero tolerance to bullshit and take up space in everywhere you are. Whether you do a 9 to 5 job, so आप अगर अब meeting room में हो, take up space. Be loud, express yourself, voice your opinions. In the gym, take up space. I know it's a male-dominated space. Still take up space. On the road, driving, take up space. Don't be scared. Don't be intimidated. The world is growing. If there are 50 people doubting you, there will be 10 people who will back you, who will support you, who will be proud of yourself. And all you have to do is to focus on those 10 people and your inner confidence. Uske alawa, I think women are so wonderful. Like, I'm a little biased towards women. I love women. I think they can do so much. They can raise children. They can raise companies. Like, we're taught to be like multitaskers and to wear all hats, and we wear all hats so beautifully. The women can just do wonders. They just have to believe in themselves a little more and not get affected by the judgments around. कुछ तो लोग कहेंगे हैं, लोगों का काम है Like कहना. I saw an Instagram reel once, and the girl said कि कुछ तो लोग कहेंगे, 4 लोग कुछ तो कहेंगे, अगर वो भी मैं ही सोचूंगी तो वो 4 लोग क्या सोचेंगे फिर. So let them have opinions on you. You enjoy your life. So that's great to hear. So Smita will wrap our episode, and it's been lovely interacting you, both as a fan and as a podcast host, that you talk about that. Why I'm here is because I am celebrating your life. I'm celebrating your achievements. I'm celebrating your failures also. Because if you celebrate someone's everything, that means you are something. And there's a reason why you're sitting here is not because, like I told you, it's about a brand or something. It's about the person you are. It's about the fighter you are. And I have started this journey where I'm trying to say this story. I'm a writer. So my thing is I want to portray a story. कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक दिक्कत हुआ, कहाँ पहुँची, क्या करना चाहती है और आप क्या सीख सकते हैं. और पॉडकास्ट हर लोग करते हैं, हर लोग का तरीका अलग है. कुछ मजाक करते हैं, कुछ का ह्यूमर अच्छा होता है, कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं. मेरा तरीका डिफरेंट है. हम चाहते हैं आपको हम स्टोरी बताएं. मेरा पॉडकास्ट आपको समझ नहीं आएगा अगर आप 15 मिनट देखेंगे. आई वॉन्ट यू टू वॉच
टाइम मिलता है जब भी पूरा देखो तो आपको जर्नी समझ में आएगी कहना क्या चाहता है. काफ़ी न्यू है मेरे लिए भी तो शायद थोड़ा प्रॉब्लम होता होगा कि यार कनेक्शन नहीं है, बट इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट द गेस्ट जो उनका स्टोरी है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो स्मिता, लाइक how is the show for you, how is the platform for you, how is the host for you, regarding how you feel कि ये platform ये channel या फिर जो मेरा thinking है to promote Biharis and to promote Bihar and their talent to worldwide. My caption is कि Patna to the worldwide. कैसा लगा आपको शो पर आकर के, and how you feel कि how it gonna contribute to the entire society? And this is the last question of mine. So I think even though we are meeting for the very first time, it felt like I've known you for a long time. I think the comfort that I felt to express everything so raw and so unfiltered, that says a lot about you as a host and your goal with this podcast. I really appreciate that. And I think you've been very curious to know the story without interfering, which is amazing. And the thing that you said, that you want to promote Biharis, because we are also so severely judged, even though Biharis are like outstanding performers in all fields, be it tech or marketing or anything. You see like IT be dominated hai bahut zyada Bihari se. So that is also a very wonderful, noble thought. And I wish you all the best. And I'm sure this podcast will host a lot of successful and upcoming Biharis who will be like upcoming superstars in their respective fields. That's so sweet of you to talk about the channel, and I'm really hope that whoever is going to watch the video, they will talk about the journey, they will talk about the strength. Moreover, they will talk about the entire concept of mine to record somebody who's trying to achieve something different. And what is our requirement to support journey like these? Don't abuse, don't put the negative comments. Instead, try to promote, try to learn, and try to grab. So this is me, Akshay, hosting from Delhi. I'll see you next time soon. Thank you. Thank you.